हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक. आवर फेवरेट टॉपिक स्ट्रेट लाइन इन 2D. बेटा स्ट्रेट लाइन हमारे पास 11th क्लास में भी टॉपिक है और 12th क्लास में भी टॉपिक है. In 11th class, we discuss straight line in 2D means 2 dimension, and in 12th class we will discuss straight line in 3D means 3 dimension. Okay beta? So in 11th class we discuss straight line in 2D. 2D means x coordinate and y coordinate. Okay? So today we will discuss about types of straight line. First of all, we should learn equation of a line which is passing through a given point x1 y1 and having a slope m. Means अगर कहीं क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है m और फाइंड आउट करना हो इक्वेशन ऑफ straight line, then we should use this formula or this condition y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1. We should put y1 and x1 here and value of m here. Is that clear beta? After putting the values of x1 y1 and m, we will solve this equation like ax plus by is equal to c or ax plus by plus c is equal to 0. Okay? Next condition for equation of straight line is equation of straight line which is passing through two given points x1 y1 and x2 y2. बेटा इस फॉर्मूले में there are given only one point and one slope, and in this formula there is two given points, so it is 1 point formula and it is 2 point formula of a straight line, and formula is y minus y1 is equal to in bracket in numerator y2 minus y1 upon in denominator x2 minus x1 and in bracket x minus x1. तो बेटा यहां हमारे पास इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी y and x are variable point, okay, and x1 y1 and x2 y2 are fixed point, because we all know that definition of a straight line is a path or a locus of variable point which is varies in between at least two fixed points. Okay beta? So it is equation of straight line which is passing through 2 points. Okay? Now बेटा क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन चेंज भी हो सकती है, like find the equation of straight line which is passing through a given point and parallel to given line ax plus by plus c is equal to 0. Now listen, in these conditions there is given point x1 y1. अब यहां हमारे पास स्लोप गिवन है m, बट यहां हमारे को कंडीशन चेंज हो गई. Required line is parallel to given line ax plus by plus c is equal to 0. तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन. एज वी नो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन फाइंड बाय द कंडीशन m is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y. बेटा ये हमने जो है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है. स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो हमने यहां से m स्लोप कैलकुलेट कर लिया. नाउ
we have a slope and this line is parallel to required line. So as we know, for parallel condition m1 is equal to m2. So we use slope of this line as m here and given point x1 same as here. So equation of our required line is y minus y1 is equal to minus a upon b x in bracket x minus x1. Here minus a upon b is slope of this line. Is that clear beta? Same as our next condition is, if we want to find a equation of a straight line which is passing through a given point x1 y1 and perpendicular to given any line ax plus by plus c is equal to 0. Now, first of all, we should find the slope of this line by this formula. Okay? According to given condition, this line, required line, are perpendicular to each other. So, m2 is equal to minus 1 upon m1, where m1 is slope of given line. We use here like this, y minus y1 is equal to b upon a and in bracket x minus x1. This is our equation of required straight line. Is that clear beta? तो बेटा इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है हमारी एनसीईआरटी बुक चैप्टर 10th में एक्सरसाइज 10.2 and 10.3. So I am taking some questions based on these topics. Okay beta? So our question is, if 3 points h, 0, a, b and 0, h are collinear, then show that a upon h plus b upon k is equal to 1. बेटा ये हमारे बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. सॉल्यूशन ऑफ दिस, मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है फॉर एक्सप्लेनेशन. ये हमारे को एक लाइन है. अब ये तीनों जो पॉइंट्स हैं अगर कोलिनियर है तो देखो इनका जो है इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइंट कर रही लाइन उसका स्लोप और इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइंट कर रही है उसका स्लोप इक्वल होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, लेट ए बी एंड सी, मैंने नेमिंग कर दी इनकी. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? Formula of slope is m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So we use this formula for these 2 points first like this, and again use this formula for these points like this. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्या? यहां पे हमारे पास b a minus h as it is, k minus b as it is और इट इज माइनस ए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, देन वी गेट k माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट दिस मल्टीप्लाइड बाय a माइनस h एंड माइनस a मल्टीप्लाइड बाय b. नाउ सॉल्व द ब्रैकेट एंड माइनस ab इज कैंसल आउट बाय माइनस ab क्योंकि इसको ट्रांसफर करनी है. सो वी हैव ओनली ka माइनस kh प्लस bh इज इक्वल टू 0. अब इस kh को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया और टोटल टर्म में हमने क्या कर दिया, kh से डिवाइड कर दिया. दैट इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन. ओके देन बेटा? यस. नाउ आई एम टेकिंग अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through a given point -3,5 and perpendicular to a line which is joining 2 points 2,5 and -3,6. For solution of this, first of all
we want to find the equation of this line which is passing through point -3, 5 and this line is perpendicular to this line which is passing through two given points like 2, 5 and -3, 6. बेटा ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए. अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन with the help of this formula. Slope of the line joining these given points, m1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is y1 y2, what is x1 x2? As we know, this is x1 y1 and this is x2 y2. Putting these values in this, then we will get slope of line joining this point like -1 by 5. Is that clear? We will find the equation of line which is perpendicular of this line. So, equation of line is y minus y1 is equal to -1 upon m1. It is m1. And in bracket x minus x1. Putting the values of x1, y1 -3 and 5 and what is the value of m1? -1 upon 5. I put here, then I get y minus 5 is equal to 5. बेटा याद रखो डिनोमिनेटर में जो होता है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है. So 5 shift in numerator and minus to minus cancel out. So we get y minus 5 is equal to 5 in bracket x plus 3. अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे. Then we will get equation of required straight line like 5x minus y plus 20 is equal to 0. Is that clear, beta? Now, I am taking another most important question of our NCERT book. Question is, find the perpendicular distance of point, given point 3, 5 from a given line 3x minus 4y minus 26 is equal to 0. बेटा ये थोड़ा सा नया टॉपिक हमारे पास है. किसी भी पॉइंट की किसी स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करनी हो तो एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है. दैट इज टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट x1 y1 टू गिवन लाइन ax plus by plus c is equal to 0. तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, p is परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और बेटा देखो मैंने यहां पे इसको मॉडुलस में मेंशन कर रखा है. Why? Because of distance cannot be negative. तो अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू भी अगर हमारे पास तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे मॉडुलस यूज ले लिया है. ओके, अब देखो ना, फॉर्मूला इज, लिसन, इट इज a given point x1 y1 and perpendicular distance of this point from this line ax plus by plus c is equal to 0. This is perpendicular distance. ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है हमारे पास, that is perpendicular distance. ओके, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a. अब देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, यहां हमारे पास जो x and y, we replaced x and y by given point x1 y1 like this. A in place of x x1 and plus b in place of y y1 and plus c. ये जीरो मेंशन नहीं करना है, ओनली हमारे को ये कंडीशन यूज लेनी है, a x1 plus b y1 plus c and in denominator in square root square of coefficient of x plus square of coefficient of y. What is the coefficient of x? A. So we put here a square. What is the coefficient of y? B. So we put here b square. Or this is the simple formula for finding the perpendicular distance of a given point from a given straight line. Okay बेटा, so सिंपल सा हमने ये पॉइंट गिवन है, ये लाइन गिवन है, सेम पैटर्न पे हमने वैल्यूज पुट की ओनली. सो 3 as it is, in place of x I put 3
and in place of y I put 5 and minus 26 as it is, and in square root coefficient of x 3 here and coefficient of y minus 4. So square of minus 4 always positive 16. So we get 9 minus 20 minus 26 upon in square root 9 plus 16, and 9 plus 16 is 25 and square root of 25 is 5. अब देखो बेटा यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास इट इज नेगेटिव 37, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी शुड यूज मॉड्यूलस लाइक दिस. सो आंसर इज 37/5 यूनिट. ओके बेटा, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.